Congratulations, you are a chartered accountant. Imagine few months down the line you could be a chartered accountant. Sounds like a dream, right? But अब टाइम आ गया है इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने का. So if you have a dream of becoming a chartered accountant and you're looking for a plan, this video is for you. Hi everyone, this is CA Shivani and welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to suggest you an amazing actionable plan to clear CA final November 2024 exams. What to do about SPOM? एक ग्रुप देना है या both ग्रुप्स देने हैं, कितने रिविजन करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे. But I've got you covered. Stay tuned till the end because I have a bonus tip for you which can be an absolute game changer. So without wasting a moment, let's get started with the video. So your absolute first step should be to clear SPOM. I would personally suggest कि 31 जुलाई 2024 तक SPOM टोटली ख़त्म करना ट्राई करो. सबसे पहले ICAI के जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड आवर्स है फॉर SPOM वो ख़त्म करो. वंस दैट इज डन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर SPOM एंड गिव योर एग्जाम. SPOM क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप ये क्लियर नहीं कर देते तब तक आप CA फाइनल के एग्जाम में अपीयर ही नहीं कर सकते. So make sure that you dedicate sufficient amount of time for SPOM and get it out of the line. SPOM related strategy videos already इस चैनल पे अपलोडेड है, so make sure to check out that videos as well. अब सबसे बड़ा सवाल, सिंगल ग्रुप दे या बोथ द ग्रुप्स दे? ये डिसीजन टेक्निकली हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट मैं आप सबको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाली हूँ. सबसे पहली कैटेगरी है जिन्होंने ऑलरेडी दोनों ग्रुप अपीयर किए हुए थे इन द पास्ट अटेम्प्ट. Second category students are the ones who had attempted single group in the previous attempt. And third category students are those जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है या फिर जो CA फाइनल पहली बार अटेम्प्ट करने वाले हैं. So for the first category students, I would suggest you can absolutely go for both the groups. For second category students who had appeared for single group earlier, if you think that you can finish the other group studies by 31st August, in that case you can appear for both the group. Otherwise, single group dena is better. And for those who have not started studying yet, I would personally suggest go for single group. Especially because इस बार SPOM है, SPOM में आपका बहुत सारा टाइम जाने वाला है, उसके बाद you are gonna start your preparations. So make sure to allocate appropriate amount of time for each subject. Now let's discuss an action plan for single group students. So here I am assuming that 31st July तक आप अपना SPOM clear कर दोगे and 1st August से you will start studying for your final exams. So आपके पास total 92 days है till your exams. So in first 45 days you will finish your studies. So for the studies you are going to allot 15 days for each subject. So you have 3 subjects in every group. Allot 15 days to each subject. So total 45 days में you should be done with your studies. And whenever you are studying, make sure कि अगर practical exam है तो writing practice करनी है. अगर theory subject है तो keywords पे focus करना है. And सारे subjects के लिए MTPs, RTPs, past papers definitely solve करने हैं. So once you're done with your studies, आपको आपकी first revision finish करनी है in 24 days. So you will allot 8 days for each subject. And during your first revision, you are going to solve one mock test paper. So your strategy should be to finish the revision of one subject and immediately solve one paper, then move on with the next subject and then solve one paper. So during your first revision, you are going to solve mock test papers. And once you're done with your mock test papers, you are going to evaluate what are your weak areas. आपको प्रैक्टिकल्स में दिक्कत आ सकती है, आपको राइटिंग स्पीड में दिक्कत आ सकती है, आपको थ्योरी मेमोराइज करने में दिक्कत आ सकती है. जो भी आपका वीक एरिया है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. सेकेंड रिविजन आपको करनी है इन 12 days. दैट इज यू विल हैव टू अलॉट 4 days फॉर ईच सब्जेक्ट. एंड इन 4 दिनों में आपको आपके वीक एरियाज पे भी काम करना है. Once you're done with the second revision, move on with the third revision, and here you're going to allot 1.5 days for each subject.
ये जो रिविजन होने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी योर टेस्ट एंड ट्रायल रिविजन, बिकॉज एग्जाम के पहले आपको एग्जैक्टली 1.5 डेज मिलने वाले हैं टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स. So this revision will be a rehearsal for that exam day revision. So this is your overall plan for a single group. But हमारे पास तो 92 days थे और ये प्लान तो सिर्फ 86 days का है, तो बाकी के दिन कहाँ गए? हाँ, आई नो दैट यू हैव 92 days, बट जो पहला पेपर होने वाला है उसके पहले के लास्ट डे रिविजन्स के लिए मैंने 6 days असाइड रखे हैं. So you are going to finish your studies and your revisions in 86 days, and then you will start preparing for your first paper and give 6 days for your first paper. Now moving on with the both the group plan. यहाँ पे भी I am assuming that you will finish your SPOM by 31st July and you will start preparing for finals from 1st August. So both the groups के लिए सबसे पहली चीज you will start with group 1. And the main reason behind it is कि group 2 में there is one paper called IBS जिसमें group 1 से भी questions आ सकते हैं. So you need to prepare for group 1 first and then move ahead with group 2. उससे क्या होगा कि आपको IBS पेपर में फ़ायदा हो जाएगा. So start studying with group 1 and group 1 की studies finish करने के लिए you will allot 30 days. That is, you will give 10 days to each subject. Once you're done with your group 1, move ahead with group 2 and here you will allot 36 days. That is, you will give 12 days for each subject. But you will keep revising group 1 in these days as well. So if you're studying for 8 hours, make sure that you revise group 1 for at least 2 to 3 hours and rest of the hours you can allocate for preparing for group 2. And जब भी आप group 1 revise कर रहे हो, make sure that after revising group 1 you will have to give one mock test for group 1. Once you're done with all of this, you will revise group 2 in 12 days. That is, you will allot 4 days for each subject. And with this you are also going to solve one mock test paper for group 2. Then you will move on with your final revision and you will allot 9 days for the final revision. That is, you will give 1.5 days for each subject and this is going to be your rehearsal revision for the last 1.5 days before your exams. So that was the plan for both the group students, and as promised, let's come to the bonus tip. And today's bonus tip is that ICAI material is your best friend. जैसे यू नो मुश्किल टाइम में 10 दोस्त काम नहीं आते, बट वो एक दोस्त काम आता है और हमें मुश्किल टाइम से बाहर लेके आता है. ICAI मटेरियल इज दैट फ्रेंड फॉर यू. आपको 10 ऑथर के बुक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ICAI के मटेरियल की ज़रूरत है. Even if you focus on just ICAI material, you can easily clear in first attempt along with the rank. Yes, I kid you not, ICAI material is your Brahmastra, it is your best friend, so please focus on ICAI material. And when I say ICAI material, I mean study material, RTPs, MTPs, past paper, everything that is related to ICAI. So that's all for today's video. Remember that you got this. CA क्लियर करना मुश्किल ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है. सो स्टे फोकस्ड, गिव इट योर बेस्ट शॉट. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.